friends, and it's so great to be in conversation with you all yet again. Last time we had a very interesting chat on PCOS and everything about related to that and fertility and pregnancy. And today I think it's such a wonderful topic of early symptoms and signs of pregnancy. But before we dig deep into the topic, I want to reintroduce myself for all those who weren't there for my talk last time. I'm Dr. Tanushree Pandey. I am a Master of Surgery in Obstetrics and Gynecology. I have my own clinic in Sion West, Mumbai, known as Padgaonkar's Clinic. And my husband is a cardiologist, and I, being a gynecologist, we run a center together. And also, I am known on Instagram as Gynae Guru, and where I try to create awareness and answer every question, the tabooed questions, the hush hush questions, and the questions that you're not comfortable asking your doctor one on one, or because of COVID you haven't been able to reach out to your doctor. And I try to cover all those topics. I also do online consultations, and I normally do them on Tuesday, Thursdays, and Saturdays after 6 p.m. because those are the days when my offline practice allows me to do it. I'm available at my clinic every day between for booked consultations. I'm available after 4 p.m. And for emergency, of course, it's any time whenever the hospital is open 24 hours. I am on leave till the 11th though, so if you are planning to book an appointment, it would have to be after the 11th because of some personal problem in the family. So anyway, do please, if you like today's talk and if you like my previous talk, please do go and follow Gynae Guru. That's going to be very motivating for me, and especially because I've been very low of late because I've lost my mother, and this is the first live session that I'm doing after that. And in fact, I was saying no to all the other live sessions, but then I thought it's Baby Chakra, and it's Baby Chakra, I think, understands the importance of that bond between a mother and a child. And I love their concept, and I love what they do for mothers, especially. And that's why I wanted to be here today. And this is like a tribute to my mother, wherein I am gathering the strength to get back to work. And you guys are going to give me that strength. So follow Baby Chakra because I'll keep coming to you guys with all the nice topics, all the relevant topics for mothers, especially for children, for pediatric groups, and also do follow my page, like I said, Gynae Guru, because I need that extra motivation right now from you guys and that support. So, having said that, I think let's go to jump into this lovely topic, which is signs and symptoms of early pregnancy. So, what do you first? You need to understand what is exactly a symptom and what is a sign. So, symptom is something which you feel on your own. Supposing if you have a fever, then a symptom is going to be uh, it's going to be something that you feel on your own, right? So it's going to be like supposing if you're going to say when you were coming down with COVID in those times and you would feel tired and you would feel a sore throat. So that's a symptom. And then what is a sign? That when you actually check with your temperature and you see your a temperature on your thermometer. So that is what is a sign. So sign is what a doctor is going to see, and symptom is what you feel. So both are very important because you need to know for yourself, because when initially when you conceive, you need to first realize that you're pregnant, and then only are you going to eventually go to the doctor or take a test and then figure out. So how do you know? Because not every pregnancy is planned, or you've taken prenatal counseling. Though I want to tell everybody that in today's day and time, prenatal counseling, which is you meeting your doctor or you deciding on your doctor before you get pregnant, actually,
is extremely important, because we are in so much of stress, and there's just so much of high risk in today's pregnancy. Then it's always better and it's easier to solve those problems before you conceive than to solve them once you've conceived. And that's where the prenatal counseling and starting folic acid and starting all the right supplements before you conceive comes into play. So having said that, but if for whatever reason you haven't been able to take that prenatal counseling, and now you want to know that, are you pregnant? So what are the few symptoms and signs that are going to sort of hint towards that, okay, yeah, maybe you're pregnant? So the first one being, the first that happens with some people, even before they realize that they've missed their period, is a lot of nausea. Because it's going to be 1 month, so 4 weeks from where you sort of, almost 4 weeks, or for some people 2 weeks, depending on what part you conceive, that you'll realize that you've missed your period. But before that, as early as the second or the third week in pregnancy, you start feeling extremely nauseous. You're going to have this altered sense of smell. You'll suddenly, like, thick smells that didn't irritate you have started irritating you. And in the morning you wake up and you suddenly want to throw up, and even if you drink water you want to throw up. And this keeps on happening, right? And it almost gets worse every day for the first couple of weeks at least. But have you ever wondered why does it happen? I mean, since donkey's years, we've always associated nausea or vomiting with pregnancy. But why does it really happen? So what happens is that there are two hormones which are particularly responsible for this, which are raised in pregnancy. One is your beta HCG, human gonadotropin hormone, which is particularly like a telltale of your pregnancy, and the other is progesterone, which is as it is present in your body, but it really peaks in your pregnancy. So what does HCG do? That also stimulates a part of your hypothalamus, a part of your brain, which sort of makes you more, nauseous and sensitive to smell. And then the progesterone is a hormone which decreases motility completely, whether it's your guts, whether it's your uterus, whether it's your esophagus or your stomach. And because of which, because the downward motility is decreased because of the high progesterone, you end up taking all of it out. And that's why the vomiting happens. So if it's like once in a day or just in the morning and it's a little bit, it's nothing to worry about. But then if you're having excessive vomiting, you can land yourself into acidosis. So if that is happening to you, you definitely need to go to your doctor, figure out whether it's pregnancy or something else, and start medication soon enough. So, what medication exactly am I talking about? Now, it's not all. You have to know that over-the-counter nausea pills or vomiting pills, they're not safe and recommended, especially in the first 12 weeks of pregnancy. On the contrary, like vitamin B6, which is pyridoxine, and doxylamine. These are two things that are safe in pregnancy, and they help in reducing your nausea by acting directly at your brain center. So that a lot of mothers must be aware of, Doxinate. That's the tablet that it's commonly available, and we put you on that. Then there are a lot of things like eating dry bread in the morning, eating a little bit of ginger, not eating spicy food, and not staying hungry for too long. So all these things help you in managing your nausea better. So nausea is one of the first symptoms that you're going to witness. Then, of course, after that is a missed period. So you need to understand when in your cycle do you conceive is the time when you ovulated. And if in a normal, say, a 28 or 30-day cycle, ovulation happens 14 days before your next cycle. So, supposing, if you were to conceive, if you started with your period on first, then your ovulation was probably somewhere around, say, the 17th or the 18th, because it happens 14 days before your next cycle. So that's like a rough estimate of when you know when you ovulated. So then 4 weeks from there is when you actually, you're going to know that you've missed your period. So now you need to realize not every missed period is a pregnancy. And not every pregnancy is going to come off as a missed period. Now you're going to be like, what do you mean by that? I mean, ठीक है, हर मिस पीरियड प्रेगनेंसी में नहीं लैंड करता, बिकॉज आपको पता होगा पीसीओएस से भी कई बार पीरियड्स डिले हो जाते हैं, कई बार हार्मोनल इरेगुलर होते हैं, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स में,
हाइपोथैलेमस का कोई कॉज होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है, तो उससे पीरियड्स डिले हो जाते हैं। बट मैं कह रही हूँ कि कई बार पीरियड आता भी है और तभी भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज, कई बार एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब आपका एम्ब्रियो या आपका बेबी यूट्रस में जाके जब इम्प्लांट हो रहा होता है, तो वो अपने लिए जो जगह बना रहा होता है, उससे इनिशियली थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है। पूरा एकदम खुल के पीरियड नहीं आएगा जैसे आपको फर्स्ट या सेकंड डे पे आता है, बट थोड़ा पिंकिश, जो आपका नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज, वो हल्का सा ब्लड में मिक्सड हो सकता है। एंड कई लोगों को स्पेशली जैसे पीसीओएस पेशेंट्स हैं जिनको वैसे ही बहुत स्कैंटी फ्लो होता है, सो दे में एक्चुअली कंफ्यूज इट एज अ पीरियड, बट वो पीरियड नहीं होता। तो अगर यू हैड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू हैव हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड आपका नेक्स्ट पीरियड बहुत ही सिर्फ स्पॉटिंग होती है, अच्छे से नहीं आता है, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो घर पे किट आता है वो आप जरूर लें एंड मेक श्योर करें कि भैया आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। सो मिस पीरियड, अगर मिस पीरियड है तो कब लेना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट? आइडियली तो आपका प्रेगनेंसी, इफ यू आर वरिड दैट यू आर प्रेग्नेंट, just 1 week from the day you think you've had unprotected sex, आपके ब्लड में प्रेगनेंसी पता चलने लगती है। तो उसको सीरम बीटा एचसीजी हम कहते हैं। वो अगर हम आप कराओगे तो वो 7th या 8th डे से ही राइज होना शुरू हो जाता है, एंड जस्ट 10 या 15 डेज के बाद आपका यूरिन में भी टेस्ट पॉजिटिव आने लग जाएगा। बट आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि एक मॉर्निंग यूरिन ले हमेशा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एचसीजी का लेवल होता है। तो मॉर्निंग सैंपल यूरिन का लें और उसमें टेस्ट करें अगर 2 लाइन है तो मतलब कि आप प्रेग्नेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्ट नेगेटिव आया है तो आप 100% प्रेग्नेंट नहीं है, बिकॉज वो कई बार 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद वो पॉजिटिव आ जाता है। सो वीव कवर्ड मिस पीरियड्स, वीव कवर्ड nausea. Then some people also have sore breasts, tenderness, आपके ब्रेस्ट पेन करते हैं। तो वो आपने नोटिस किया होगा कई बार मिड साइकिल भी करते हैं। तो मिड साइकिल क्यों करते हैं? जब आपका ओव्यूलेशन होने वाला होता है तो आपका ईस्ट्रोजन राइज होता है, और जब ईस्ट्रोजन राइज होता है तो उस वजह से भी आपके जो ब्रेस्ट हैं वो टेंडर होते हैं। एंड सिमिलरली जब प्रेगनेंसी होती है तो भी आपका ईस्ट्रोजन राइज होता है, तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, बीटा एचसीजी सभी कुछ राइज होता है प्रेगनेंसी में, उस वजह से सो ब्रेस्ट होते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं, तो वो आपको यू हैव टू जस्ट वेयर अ टाइट ब्रा। ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत सारे पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि मैडम हमारे माय मदर इन लॉ, माय मदर हैज सेड कि अगर मैं बहुत टाइट ब्रा पहनूंगी तो मेरे को मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, बट दैट्स अ मिथ। तो ऑलवेज प्रेगनेंसी में एक अच्छा वेल सपोर्टेड टाइट ब्रा पहनना चाहिए, बिकॉज उससे एक तो आपके ब्रेस्ट सैग भी नहीं होंगे और ब्रेस्ट पेन भी नहीं करेंगे। फिर आपको होता है डार्केंड एरियोला। एरियोला क्या होता है? जो निपल के अराउंड का जो आपका डार्क ब्राउन या पिंक या जो भी स्किन होता है वो और डार्क हो जाता है। तो अब इससे घबराना नहीं है, क्योंकि अपना इंडिया में गोरे स्किन की और इस सब की इतनी ज़्यादा फैसिनेशन अभी भी अनफॉर्चुनेटली है कि लोग कई बार बहुत डर जाते हैं कि अरे मैडम हमारा तो पूरा स्किन ही काला हो रहा है। टमी के बीच में भी कई बार एक डार्क ब्लैक लाइन आ जाती है, which is known as linea nigra in medical terms। तो ये सारी चीज़ें अगेन बिकॉज ऑफ सर्जन हॉर्मोन्स, मतलब हॉर्मोन्स राइज हो जाते हैं, उस वजह से होता है। एंड ये 80% प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मल हो जाता है। थोड़ा 20% तो देखो बच जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर बॉडी इज नेवर गोइंग टू बी द सेम, एंड बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट ऑल, दैट you've given birth to a human being and that's what makes you a mother, so you have to be proud कि आपके साथ आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, यू नीड नॉट वरी अबाउट दोज, बिकॉज दैट्स व्हाट हैज लेड टू दैट ब्यूटीफुल बेबी हुज कम इनटू दिस वर्ल्ड। तो बट वो डार्कनिंग ऑफ स्किन नॉर्मल होता है। अगर फेस पे डार्कनिंग होने लग जाए, जिसको हम मेलाज्मा कहते हैं, क्लोएज्मा, जो स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान होता है, वो अर्लीस्ट आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, बिकॉज देन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप प्रेगनेंसी के दौरान उस पर लगाते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, और प्रेगनेंसी के बाद फिर उसको बहुत एक्टिवली ट्रीट करना पड़ता है। नहीं तो कई बार बहुत ज़्यादा फेस के अराउंड डार्क पिगमेंटेशन हो जाता है, यहाँ पे पैचेस, एंड देन इट कैन बी वेरी नर्व wracking, बहुत बुरा लग सकता है आपको उस वजह से। सो देन दैट इज वन। फिर ना कभी कभी होता है कि आपका यू प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया, आप बड़े खुश हैं, और सडनली पेट में दुखने लगता है बहुत क्रैम्पिंग होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं एकदम डर के, घबरा के रात को कि मैडम हमारा तो
हमें ऐसा लग रहा है कल हमारे पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो भी क्या होता है कि जब आपका यूट्रस जगह बना रहा है वो फीटस के लिए, वो बेबी के लिए, तो वो थोड़ा सा वो इट जस्ट सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन रिलैक्सेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस व्हिच लीड्स टू दैट क्रैम्पिंग पेन। हाँ, बहुत एक्सेसिव हो तो ऑफ कोर्स यू हैव टू immediately rush to a doctor because it can also be a sign of an abortion. But if it's bearable, if it's not too much, then it's normal because initial few months में तो इसी cramping होती है, tiredness होती है। तो unfortunately again कई लोगों को लगता है कि the woman is using it as an excuse for uh, just not doing the household chores or not going to work कि भाई मैं तो थकी हुई हूँ, मैं तो थकी हुई हूँ, मैं तो थकी हुई हूँ। पर नॉर्मली क्या होता है कि जितने हार्मोन्स राइज होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी, एंड ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंक्रीज होता है, तो प्रेगनेंसी एक हाइपोडायनामिक स्टेट होती है। तो आपके हार्ट को डबल से ज़्यादा भी मेहनत कर रहा होता है हार्ट, और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आपका हीमोग्लोबिन कम होता है, तो एनीमिया भी सेट इन होता है। इसलिए हम हमेशा आपको आयरन टैबलेट्स देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उस वजह से क्या होता है, थोड़ी टायर्डनेस होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे बेबी बढ़ते जाता है आपका जो डायफ्राम है, जो मसल आपकी लंग्स की, वो कंप्रेस होने लगती है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है। बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आप यहाँ से अपने किचन तक भी चल के जा रहे हैं और सिवियर ब्रेथलेसनेस हो रही है, so that's not normal because if you've had a heart condition, it can get exaggerated during your pregnancy. So that's why then again prenatal counseling is very important so that all that is ruled out. But a certain amount of fatigue, थकना, टायर्ड होना, ये बहुत नॉर्मल है, और आपकी फैमिली को और आपको इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी सिर्फ आपको फंक्शन नहीं करा रही, बट एक न्यू ह्यूमन बीइंग को बर्थ दे रही है, राइट? देन अनदर थिंग दैट हैपेंस इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो ये आपको समझ जाना पड़ेगा कि शुरुआत में पहले 3 महीने और आखिर के 3 महीने ये तो बहुत परेशान वाले होते हैं, बिकॉज यू हैव टू गो टू द वॉशरूम अगेन अगेन एंड अगेन। इसके दो अलग रीजन है। पहले 3 महीने में क्या होता है कि जो यूट्रस है वो धीरे धीरे बढ़ता है और वो ब्लैडर के ऊपर कंप्रेस करता है आपके, क्योंकि यूट्रस छोटू सा होता है, ब्लैडर ऐसे, यूट्रस ऐसे, फिर यूट्रस बढ़ के वो आपके ब्लैडर को कंप्रेस करने लगता है। तो इसलिए इनिशियल 3 मंथ्स में बहुत ज्यादा बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। जब तक वो जल नहीं रहा है, जब तक रुक रुक के नहीं आ रहा है, खुल के आ रहा है, बस बार बार आ रहा है, वो नॉर्मल है। बट अगर जलने लगता है, पेन होने लगता है, ठीक से आप आपको ऐसा लग रहा है मैंने ठीक से मैं इवैक्यूएट ही नहीं कर पा रहा हूँ, so that is a problem, and then you should show your doctor and not take a UTI lightly during pregnancy because it can also lead to a miscarriage or preterm labor. आखिर के 3 महीने में क्यों होता है? क्योंकि फिर जो बेबी है वो इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो और ब्लैडर को प्रेशर देने लगता है। बीच के 3 महीने में थोड़ा ब्लैडर और आपका यूट्रस इज इन हार्मनी, so that's why you are going to have increased urination एकदम beginning of pregnancy में and then एकदम end of pregnancy में, which is normal. And exaggerated sense of smell we've covered, and then of course how can we miss cravings? मीठा खाने का मन, खट्टा खाने का मन, नमकीन खाने का मन। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक चीज है एक्चुअली। सो cravings during pregnancy is not something that you're doing out of boredom or just because your mother had cravings and that's why, or because you've seen it in movies and so we feel कि हमेशा cravings होएंगी। बट क्रेविंग इसलिए होती है बिकॉज दैट्स योर बॉडीज वे ऑफ टेलिंग यू व्हाट इट नीड्स। तो खट्टा खाना, अचार जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं, चटपटा, दैट्स एक्चुअली बिकॉज द salt requirement, the electrolyte requirement during pregnancy to a certain extent increases. मीठा खाने का जब बहुत ज्यादा मन करता है, उसका ये मतलब हो सकता है कि या तो शुगर लेवल्स लो है और या तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स डायबिटीज, एंड दैट्स व्हाई देन अगेन यू हैव टू, दैट्स व्हाई हम आपका शुगर प्रोफाइल पूरा प्रेगनेंसी में प्रीनेटली एक बार चेक करते हैं, प्रेफरेबली बिफोर यू कंसीव, देन एज सून एज यू कंसीव चेक करते हैं, देन एट 28 वीक्स चेक करते हैं, बिकॉज डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो इसलिए क्रेविंग्स होती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन हैव कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज फिर से जो प्रोजेस्ट्रॉन है आपका, वो मैंने जैसे कि बताया कि वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्लो डाउन करता है, एंड उस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बट लैक्टोलोज सिरप और ये सब प्रेफरेबली नहीं लेना चाहिए, सो यू हैव टू इंक्रीज योर अमाउंट ऑफ वाटर दैट यू ड्रिंक। 3 लीटर पानी प्रेगनेंसी में मिनिमम पीना ही पीना चाहिए, एंड नॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज वो आयरन में भी हेल्प करेंगे एंड वो आपका रफेज रहेगा, सो इट विल हेल्प इन नॉट मेकिंग यू कॉन्स्टिपेटेड। एंड देन
last but not the least, a lot of mood swings, acne, headache, heartburn, acidity, लेटने में मुश्किल, वजन बढ़ना. वजन आपका कितना बढ़ना चाहिए? अगर आपका BMI नॉर्मल है, so it should just be between 11 to 16 kgs, not more than that. But अगर वेट ज़्यादा है तो फिर आपका you have to consult a doctor because depending on your BMI, underweight या overweight का अलग कैटेगरी होती है. अगर normal weight है तो between 11 to 16 kgs. So I guess I've covered it as much as I could briefly in the stipulated time. Let's start with a few questions from the house. So somebody asks, how big is a 2 week old fetus? So it's not even pea-sized. It's like tinier than a pea because four week old या 5 week old fetus को हम actually diagnose कर पाते हैं. 2 week old fetus तो शायद sonography में दिखे भी ना. 4 या 5 week से 2 weeks पे सिर्फ एक fetal pole होता है. So imagine like वो जो पिन जिससे हम पेपर्स वो करते हैं उसका जो हेड that tiny, just 1 mm or 2 mm is what a 2 week fetus would be. And then the next question is, how can you tell you're pregnant by hand pulse? I don't really get this question because you cannot tell. I think what you mean is कि आपकी pulse rate से बता सकते हो क्या? तो नहीं बता सकते. No, there's no way that you can tell by seeing somebody's pulse are you pregnant or not. If that's what the question meant. Then it's hello doctor, helpful session. What precaution do I need to take? Just came to know yesterday that I'm pregnant and it's 6 weeks. So of course start with your folic acid. If you're nauseous, start with doxylamine with vitamin B6, which is Doxinet plus. You need to take those 2 tablets at night. Folic acid आपको सुबह लेना है. अगर कोई high risk और नहीं है तो कोई और tablet अभी लेने की जरूरत नहीं है. Lot of rest. You can continue with your work, your normal schedule, but eat well and measure your weight and then make sure that बहुत ज़्यादा increase नहीं हो रहा. And of course, go and book yourself to a gynecologist as soon as possible. I still not have got my periods and it's more than 15 days. Did my test, but it's not clear. Should I go for a sonography? So yes, if you mean by it's not clear, meaning अगर faint line आई है, so you have to absolutely go to a doctor and then take a sonography because faint line कई बार मिस्टर अबॉर्शन में भी आ सकती है और या एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी आ सकती है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस के बदले किधर और जाके इम्प्लांटेशन हो गया है ट्यूब्स में या कहीं पे. तो अगर आपको डाउट हो रहा है नहीं आया पीरियड्स, आप जाके अपने डॉक्टर को दिखाओ. सीधे सोनोग्राफी ना भी करानी हो तो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ बिकॉज यू नीड a certified doctor to prescribe sonography for pregnancy to you, and then of course you must get a sonography done. Hello doctor, I have too much head pain these days. Is it normal? If you're pregnant and आपको बहुत ज़्यादा headache हो रहा है, so that can be a sign of your BP rising, hypertension. तो आप प्लीज अपना 1 week के लिए, अगर अभी आप डॉक्टर के पास नहीं भी जा सकते तो होम बीपी मॉनिटरिंग करिए सुबह शाम. जब आपका सर दर्द होता है तब स्पेशली आप अपना बीपी चेक करिए, शुगर चेक करिए, ये 2 चीज़ें. ठीक है, ऑल्टरनेट डे पे शुगर चेक करिए एंड ग्लूकोमीटर से भी कर सकते हैं आप घर पे, और बीपी मॉनिटरिंग करिए सुबह शाम. एंड पैरासीटामोल ले सकते हैं आप, वो सेफ होती है. बाकी और पेन किलर्स नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में. I have stomach pain but I'm pregnant. Should I consult the doctor? So see, I mean little bit of stomach pain जो मैंने आपको कहा, cramping और आपकी gestation मुझे नहीं पता क्या है, तो वो नॉर्मल है. पर अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, तो of course you should consult a doctor because these could be sign of like preterm labor. And then what are the 3 common early signs and symptoms of pregnancy? So I think the most common would be your missed period, your nausea, and then some amount of like spotting and cramping in your tummy. So these are the 3 most common symptoms or signs that I would say. So I think I have tried to cover most of the questions, but if you haven't been able to ask them now, we're going to be posting this live session and on Baby Chakra, and you can always ask me questions and I would try to reply to them as soon as possible.
So, but before we sign off, of course, a take-home message is going to be कि आपने सबसे preferably तो if you're planning a baby, if you want to conceive, if it's a planned pregnancy, please go and seek your doctor before it. आप prenatal counseling लीजिए, online ले सकते हैं, मुझसे online ले सकते हैं, because you know there's a certain test that we need to get done. आपका weight, अगर weight loss करना है, आपका PCOS है, PCOS control में लाना है, raise sugar है, raise BP है, migraine disorder है, कुछ भी है, तो it's always better to get it under control before you actually get pregnant. Pregnancy हो गई है, so just be very aware. Don't sort of over stress and nervous be mat hoiye, because then it's a vicious cycle. If you stress out too much, then your pregnancy end up just getting complicated. So take it easy and enjoy your pregnancy. Be aware, but please don't Google everything that happens, because it's just going to psych you out. Don't forget to follow me, Gynae Guru, on Instagram, because, like I told you, I really need that support right now, and I really need to believe that ये जो मैं कर रही हूँ वो आप लोग you're benefiting from it and आप लोग enjoy कर रहे हैं, because I need that extra push right now. Also, don't forget to follow Baby Chakra, because they are the ones who've given me this lovely platform and have stood by my side in these difficult times, and have treated me like family. So do follow Baby Chakra and do follow Gynae Guru. Keep asking us lovely questions, and we as a community are always there for you. Visit my clinic in Sion if you plan to get pregnant, you're having difficulty in getting pregnant, or if you're already pregnant and you want to book your pregnancy and take it on from there. So thank you so much, and I hope this session was enjoyable and informative, and I'm going to see you super soon again. Thank you.